वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं संग्राम। आप देख रहे हो रिसर्च रॉक्स ट्रैवलिंग देसी। और इस एपिसोड में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ दुनिया की मोस्ट लवेबल सिटी, इट्स वेनस इन इटली। ये सिटी का ऑल अट्रैक्शन मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा विद एक्सपेंसिव, सो लेट्स चेक इट आउट। मैंने एयरबीएनबी बुक की थी सेंट्रल ट्रेन स्टेशन के पास ही, 250 मीटर्स डिस्टेंस ओनली। और एयरबीएनबी का 2 नाइट का चार्जेस था मेरा 12,000। और ये वो बिल्डिंग है जिसमें मैं रुका हूँ। अब रेडी हो गया हूँ मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट टू डे एक्सप्लोरिंग टॉप अट्रैक्शंस। वेनिस सिटी में आने का एक ही मकसद था मेरा। यदि आपने रणबीर कपूर और दीपिका का ये सॉन्ग देखा होगा, खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, तो ये सॉन्ग की शूटिंग लोकेशन वेनिस सिटी में है। तो वो बासिलिका मेरा पहला टारगेट है, तो मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ और फिर रेस्ट ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अब मुझे पता चला कि वेनिस सिटी को मोस्ट लवेबल और रोमांटिक प्लेस क्यों माना जाता है। लुक एट दिस गाइस, दिस सिटी इज अमेजिंग। यहाँ पर टू व्हीलर और इलेक्ट्रॉनिक ऐसी कोई चीज़ ही अवेलेबल नहीं। यहाँ पर ओनली बोट से एक घर से दूसरे घर में, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बोट्स अवेलेबल है। ये एक अलग एक्सपीरियंस है सिटी को एक्सप्लोर करने का और टूरिस्ट प्लेस को। सो आई एम गिविंग यू सजेशन, कहीं जाओ मत जाओ इटली में स्पेशली, बट वेनिस डेफिनेटली कम। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन दिस बोट, इसका पर डे चार्जेस है 20 यूरो पर पर्सन, मतलब इंडियन करेंसी में 1400 रुपये। 24 आवर्स के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब आप किसी भी बोट में राइड कर सकते हो और कितने भी चक्कर लगा सकते हो वेनिस सिटी को। तो मैं वो टिकट परचेस करने वाला हूँ और एक होल राउंड लगाने वाला हूँ पूरी सिटी को, और रेस्ट ऑफ साइट सीन आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। अब मैं फर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एंटर करने वाला हूँ। मतलब बोट एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का साधन है यहाँ पर। सो बोट में बैठने के बाद कैसा लगता है वो दिखाता हूँ मैं आपको।
ब्रिज भी एक टॉप अट्रैक्शन में है। इसकी एक अलग खासियत है, वाइड ब्रिज है और सबसे बिगेस्ट ब्रिज इन वेनिस सिटी। फाइनली मैं रीच हो गया मेरे फेवरेट डेस्टिनेशन पे। ये वो बासिलिका है जहाँ पर खुदा जाने सॉन्ग की शूटिंग हुई थी और इट्स अमेजिंग आर्किटेक्चर। और आज की डेट में यहाँ पे पूरा पानी आ चुका है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल ही पीपल नहीं आ रहे क्योंकि 5 to 6 feet वाटर आर कमिंग हियर, ऑल एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉय। बट जब मैं गया था तब वाटर नहीं था, तो इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। और ऐसा सोच भी नहीं सकते आप कि हर तरफ से पानी और बीच में इतनी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है और ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्शन है। इट्स न्यू एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस।
सो फ्रेंड्स, ये थे वेनिस सिटी के कुछ टॉप अट्रैक्शन और साइट सीन्स। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च रॉक्स ट्रैवलिंग देसी को, और प्रेस दिस बेल आइकन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।